section of the Companies Act, that is short title, extent, commencement. So we are talking about section 1. This act is actually Companies Act, which extends to the whole of India. I hope you know what is the J&K issue, what is the article, then what is the constitutional powers. Now, in short, the entire act of India applies to the whole Jammu and Kashmir. So we are not talking any except we are not taking Jammu and Kashmir as an exception. The entire Companies Act, including shall apply to the entire India, including the state of Jammu and Kashmir. You know what is the reorganization of states. You know very well. Now, as I told you earlier, the entire Companies Act 2013 was not made applicable from 1st of April 2014. Subsection 3 defines that some of the sections will come at once, that is 1st of April 2014, and the remaining provisions will be applied to the India in a phased manner. Some section got applicable in 15, 16, then 18. So that was subsection 3, to apply the act into a phase-wise manner. Now, very important, subsection 4, the provisions of this act. हम बहुत ही easily ये कहते हैं कि Companies Act किसके ऊपर apply होगा? कंपनी के ऊपर. Company which is a company under Companies Act. It is not so. कंपनीज एक्ट वाली कंपनियों पर तो कंपनी लॉ लगेगा ही, चाहे आपने इस एक्ट में बनाई, चाहे 2013 से पहले प्रीवियस कंपनी लॉ कौन सा था? 1956. अच्छा, उससे पहले भी कोई था क्या? हाँ, 1913 ब्रिटिश एम्पायर का लॉ था. अगर वो कंपनी भी चल रही है तो भी हम 2013 के बाद में उसे इस एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी की तरह ही ट्रीट करेंगे और ये एक्ट उस पर्टिकुलर प्रीवियसली मेड लॉ कंपनी पर भी एप्लीकेबल हो जाए. उसके अलावा, apart from the companies under this act shall also be made applicable to the insurance companies, the banking companies, the electricity companies. But इनमें क्या लाइन लिखी हुई है? Except that the said provisions are inconsistent with IRDA in case of insurance company, or the BRA in case of banking company, or the Electricity Supply Act in the case of electricity company. I'm talking about clause B, C and D. So कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनीज के ऊपर तो हम ये एक्ट लगाएंगे ही लगाएंगे. उसके अलावा ईच एंड एवरी इंश्योरेंस कंपनी is actually governed with the provisions of Insurance Act and IRDA regulations and IRDA Act. एक कंपनी है, say for example SBI Life Insurance Limited. I'm not talking about, yes, say for example, or easy करते हैं, Max Life Insurance Limited. I know everyone must have heard the name Max Life Insurance, right? That is a limited company. Now, उसके लिए हमने इंश्योरेंस एक्ट बना रखा है, IRDA एक्ट बना रखा है. बट अगर IRDA में कोई बात नहीं लिखी हुई है, जहां पर IRDA साइलेंट है, जहां पर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात IRDA में या IRDA में नहीं लिखी हुई है, then Companies Act will prevail. What is the general law? Companies Act. What is the specific law? IRDA. So specific law will always prevail in comparison to the general law. That is, the company law, the insurance companies will primarily follow IRDA because it is a specific law. But किसी ऐसे मैटर पे IRDA साइलेंट है, IRDA में कोई प्रोविजन लिखा ही नहीं है किसी पर्टिकुलर मैटर पे, तो कंपनीज एक्ट विल अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर ऑन द इंश्योरेंस कंपनीज. If there is written something contradictory in Companies Act and IRDA, what we will prefer? IRDA, because it is a specific law. But if the specific law is silent, the insurance company on that particular matter shall follow the Companies Act as well, because IRDA is saying nothing. If IRDA is silent, that doesn't mean that insurance company are free to do whatsoever they want to on that particular matter. They need to follow the Companies Act. Same way may the banking companies shall follow the Banking Regulation Act. We are not taking care of them. But if there is something which is not written in banking law, that is BRA, the banking companies shall follow the Companies Act. Same goes with the electricity companies. So far, the provisions are defined in the Electricity Act, follow those acts. But if there is something on which the Electricity Companies Act is silent,
follow the Companies Act. Now, clause E and F, very important. Clause E, any other company governed by any special act. Now, when we talk about company का मतलब वही हुआ जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर तो कंपनीज एक्ट ही लगना चाहिए, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है. There are certain companies which are governed, that they are formed and incorporated under Companies Act, but they are governed by any special act. Say, for example, take an example of mutual fund. Mutual fund is not a company, it is a trust. But with every mutual fund, there is attached a mandatory company, that is AMC. I don't know whether you have heard the name. Asset Management Company. Every mutual fund shall have a AMC, Asset Management Company. That is a company, limited company, established under Companies Act. But बिकॉज वो एक म्यूचुअल फंड की कंपनी है, उसके ऊपर सेबी के प्रोविजंस लगते हैं. स्पेशल एक्ट कौन सा है? म्यूचुअल फंड का स्पेशल एक्ट बना हुआ है. बट वैसे तो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर कौन सा लॉ लगेगा? स्पेशल लॉ, दैट इज म्यूचुअल फंड लॉज. बट अगर उसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो साइलेंट है, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, उन कंपनीज पर भी जो भले ही गवर्न किसी और से होते हैं, बट उसमें अगर कोई पॉइंट साइलेंट है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी हम अपना कंपनीज एक्ट अप्लाई कर देंगे. बिकॉज आपका जो मेन लॉ है वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है इस चीज को, या उस चीज के ऊपर कुछ डिफाइन ही नहीं किया हुआ है, तो आपको ऐसा खुला नहीं छोड़ सकते, आपके ऊपर कंपनी लॉ लगा देंगे. तो है कंपनी, बट वो गवर्न किसी स्पेशल एक्ट से होती है, लेकिन उस स्पेशल एक्ट में किसी पॉइंट के ऊपर कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो आपको फ्री नहीं छोड़ेंगे, आपके ऊपर कंपनीज एक्ट लगा देंगे उस पॉइंट पर. Same goes with the last point, that is point F. Such body corporate incorporated under any act of the law of land. See, what is the difference between clause E and clause F? First word is, यहां पर वर्ड लिखा है कंपनी, जो एस्टैब्लिश तो की गई है कंपनीज एक्ट में, गवर्न किसी और से हो रही है. यहां पर वर्ड हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट. इट मे बी अ कंपनी, it can be any other separate legal entity, it can be a foreign company, it can be a limited liability partnership, it can be a statutory corporation, RBI, LIC, GIC. This is body corporate, which is incorporated under any act, but the central government has defined कि ये वाली particular body corporate भी Companies Act से govern होगी. Although टिल टुडे फ्रॉम 2014 ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं की है आज तक. जो है बॉडी कॉर्पोरेट, जो इनकॉर्पोरेट कहीं और हुई है, लेकिन उसके ऊपर हमने कंपनीज एक्ट लगाया हो या कोई पॉइंट लगाया हो, ऐसा कोई भी क्लॉज एफ में पॉइंट नहीं है आज तक. बट अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ में अपने लिए एक प्रोविजन स्पेसिफिक किया है कि इन फ्यूचर इफ वी थिंक सो, वी कैन take a body corporate and put it into the bars of Companies Acts. So very important are the words company governed by act, any other body corporated incorporated in some other act, उनके ऊपर भी एक्ट अप्लाई कर सकते हैं. So whole story, long story short, companies under the Companies Act के ऊपर हम ये पॉइंट्स लगाएंगे, मींस ये पूरा सेक्शन, पूरा एक्ट. इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनीज एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पर उनके स्पेसिफिक एक्ट्स चलेंगे, लेकिन अगर वो साइलेंट है किसी मैटर पे, तो कंपनीज एक्ट विल टेक प्लेस, विल बी एनफोर्स्ड ऑन दोस पर्टिकुलर मैटर्स. किसी और कंपनी को जो सेक्शन, जो एस्टैब्लिश है कंपनीज एक्ट में, गवर्न किसी और एक्ट से होती है, जैसे म्यूचुअल फंड एएमसी, वो गवर्न किसी, एनबीएफसी की अगर हम बात करें, एनबीएफसी, तो एनबीएफसी गवर्न होती है आरबीआई के नॉर्म्स से. बट अगर वहां पर आरबीआई के नॉर्म्स में कुछ साइलेंट है, तो उन पर्टिकुलर मैटर्स पे कंपनीज एक्ट विल अप्लाई. एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी और बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनीज एक्ट के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ला सकती है. सो दिस इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट. सो फार सो गुड. हमें समझ में आया कि ये एक्चुअल में, ये एक्ट हम बोल देते हैं टू स्टार्ट विद कि ये किस पे लगता है, कंपनीज के ऊपर. हमें पता ही नहीं है किन किन कंपनीज के ऊपर किन किन सिचुएशन में एक्ट लगेगा.